Hello everyone, welcome to Object Oriented Programming. I am Assistant Professor Zinkal Patel from ROFEL BCA College. Welcome you all. Now today I am going to explain operator overloading. It means I am going to explain how to overload unary operator and how to overload binary operator using member function and using friend function. Okay, so let me first start with unary operator overloading. Now first of all, what is unary operator overloading? Now for that, let us consider one operator, that is minus operator. And minus operator, when used as unary operator, then it take just one operand, right? Because it is unary operator. Now we know that this operator changes the sign of operand when applied to a basic data item. For example, there is a one variable integer a, and when we applied that minus unary operator, then a become minus a. Okay, so we will overload these operators that can be applied to an object in the same way it applied to an integer or float variable. Now the unary minus when applied to an object should change the sign of each of its data item. For example, if I applied unary operator on time class, then the time class के data members जो है आवर्स एंड मिनट दोनों की साइन जो है वो प्लस से माइनस चेंज हो जाएगी. सो व्हेन वी अप्लाइड that unary operator to an object, then it should change the sign of each and every data item in that class. Now let me explain this unary operator in Turbo C++. Okay, now in this program, here I take one class space. In that three data members, x, y and z, all are integer data member. Now you have to apply that unary minus operator on that space class object. Now first of all, take header file, has include iostream.h and has include conio.h. Now take a class like class space. In that write three public data member, integer x, integer y and integer z. In that take three private data member, integer x, integer y, integer z. Take one member function get data that accept the value of x, y and z. Here I mention parameter like a, integer b and integer c. Now here to accept value x equal to a, y equal to b and z equal to c. So through this code I can accept the value of x, y, z using parameter. Now next function is display function. In that you have to write a code for displaying value of x, y and z like cout /n x equal to then x. Same for x and y and z. Now you have to write one operator function, that is return type is void, then the keyword is operator and then op code. For example, यहाँ पे हमने op code कौन सा लिया है, operator minus. ठीक है. Now I can write this operator function out of the class also, like return type void, then class name with scope resolution operator, then operator keyword and op code minus. कोड लिखना है हमें कि पर्टिकुलर ऑपरेंड हमने जितने भी डेटा मेंबर लिए हैं उसकी साइन चेंज करनी है. सो x इक्वल टू माइनस एक्स, y इक्वल टू माइनस वाई एंड z इक्वल टू माइनस जेड. ठीक है. नाउ ये फंक्शन अब कॉल कब होगा. सो इंटीजर मेन में हम लिखेंगे like just write the structure of integer main. First of all, create object of space class, for example space s, then s dot get data. get data पहले फंक्शन को कॉल करेंगे, like वैल्यू है 10 माइनस 20 एंड 30. तो यहाँ पे a इक्वल टू 10 होगा, b इक्वल टू माइनस 20 एंड c इक्वल टू 30. And then object dot display. So
थ्रू दिस कोड आई कैन कॉल डिस्प्ले मेथड एंड लास्ट में अब मुझे ऑपरेटर फंक्शन कॉल करना है तो कैसे करूँगी, लाइक -s, ठीक है, s पे आगे हमें क्या लिखना है, सिर्फ माइनस. सो थ्रू दिस कोड आई कैन कॉल द ऑपरेटर फंक्शन. कौन सा ऑपरेटर फंक्शन, ये फंक्शन कॉल होगा. क्लियर. नाउ let me call the display function again so that I can display value of -s. Okay, so hope you understand this code of main function. Now let us compile it. No error, let us run it. Okay, first of all, object s have 3 data member x, y, z. So x, y and z की value क्या है, 10, -20 and 30. But later on, after applying this unary operator, what will be the value of x, y and z data member? Like x become 10 to -10, y become -20 to 20 and z become 30 to -30. Right, so here the function operator minus, unary minus, take no argument, but it is the member function of the same class, so it can directly access the member of the object which active it. Let me explain this same function using friend function. It means we can overload this same unary minus operator using friend function. Like in that हमें same class use करना है, space class with xyz private data member and public member function get data and display भी same रखने हैं. बस हमें क्या करना है, यहाँ पे कीवर्ड लिखना है friend. ऑपरेटर फंक्शन के आगे हमें friend फंक्शन लिख देना है. अब unary ऑपरेटर जब member फंक्शन पे अप्लाई होगा, then that operator function take no argument, but while we create friend function of unary operator, then it will take one argument and like space, and if I write reference variable हम पास करते हैं $s object. ठीक है, so same in definition, space ampersand s. सो यहाँ पे अब हमें डायरेक्टली ये जो डेटा मेंबर्स है उसको ऑपरेट करना है, तो हम कैसे करेंगे, s.x एंड s.x ऐसे लिखेंगे. ठीक है, आपको फ्रेंड फंक्शन क्या है वो पता ही है, वो मुझे डिटेल में एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है. यहाँ पे आपको सिर्फ इतना देखना है कि यूनरी ऑपरेटर जब फ्रेंड फंक्शन थ्रू हम ओवरलोड करेंगे तो उसमें एक आर्ग्यूमेंट पास होगा, वाइल मेंबर फंक्शन थ्रू यूनरी ऑपरेटर को ओवरलोड करेंगे देन इट विल टेक नो आर्ग्यूमेंट. ओके, नाउ यहाँ पे इंटीजर मेन में कोई चेंज नहीं है. थ्रू दिस कोड वी कैन कॉल द ऑपरेटर फंक्शन माइनस. लेट अस कंपाइल दिस प्रोग्राम. One error. Okay, space operator, it means minus operator जो function है is not a member of space. Okay, ये right error है. like हमने friend function बनाया है तो ये out of this class उसका scope लिखने की ज़रूरत नहीं है. Now let us run this program. नो एरर. सो यहाँ पे x इक्वल टू 10, y इक्वल टू -10 एंड z इक्वल टू 30. ये ओरिजिनल वैल्यू है एंड आफ्टर अप्लाइंग यूनरी ऑपरेटर माइनस, वैल्यू विल बी चेंज टू -10, +20 एंड -30. राइट, सो ओरिजिनल वैल्यू के आगे हमने माइनस ऑपरेटर अप्लाई किया तो वैल्यू चेंज हो गई है. क्लियर, होप यू अंडरस्टैंड दिस प्रोग्राम. So our next topic is binary operator overloading. We had learned how to overload unary operator using member function and using friend function. Now what is binary operator overloading? Now let us consider the plus operator for binary operator overloading. So to overload binary operator, that same mechanism can be used to overload operator. Like here, as I said, a plus operator when used as a binary, then it will take two operand, two variable, or we can say two object. Now in binary operator overloading, a statement like c equal to sum a comma b, two object है a and b, उसका sum अगर करना है हमें, ठीक है, so that can be written as c equal to a plus b. Right, a and b are two objects, so we can write a plus b.
So by overloading binary operator using member function, one argument is passed as manually. Like if I write a plus b, then left hand side का जो argument है a, that can be passed automatically in member function, operator function, right? And the second argument like b is manually passed in that operator function. But if we create a friend function, then a and b, both the argument passed manually in that operator function. Okay, so let me explain this example by Turbo C++. Now let me explain binary operator overloading using complex class. Now in this program you have to create a class, that is complex class. In that there are two float data member, real and image. You have to add two object of complex class C1 and C2. इट मीन्स दोनों की रियल वैल्यू एंड इमेजनरी वैल्यू को ऐड करनी है. ये प्रोग्राम हमने ऑलरेडी कर लिया था यूजिंग सम फंक्शन, बट टुडे आई एम गोइंग टू डू ऑल these थिंग्स यूजिंग ऑपरेटर प्लस फंक्शन. So using this we can overload binary operator. So first you have to write header file has include.h and conio.h, and then first you have to write class name is complex. In that declare two private data member, float real part and second one float imaginary part, right? And write public member function void get data to accept value. Instead of that you can also write constructor like complex, first of all default constructor, in that real equal to image equal to 0, और सिंगल वैल्यू कंस्ट्रक्टर भी लिख सकते हैं हम, लेकिन हम लिख रहे हैं डबल वैल्यू. सिंगल पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी लिख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे डायरेक्टली डबल पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर ही लिख रहे हैं. ठीक है, फ्लोट आर एंड फ्लोट आई. सो यहाँ पे जब हम कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट जब क्रिएट करेंगे तब ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा. सो रियल में वैल्यू आ जाएगी आर वेरिएबल में जो वैल्यू है वो, और इमेजनरी में आई वेरिएबल में जो वैल्यू है वो पास हो जाएगी. नाउ राइट सेकंड मेंबर फंक्शन, write another member function void display. This member function is used to display the value of real and imaginary. तो हम कैसे लिखते हैं ये वैल्यू, स्लैश एन, देन रियल पार्ट लिखते हैं, देन प्लस एंड जे, राइट, एंड देन इमेजनरी पार्ट लिखते हैं. ठीक है, तो ऐसे नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखा जाता है. नाउ फाइनल फंक्शन हमें लिखना है. कौन सा फंक्शन है? ऑपरेटर प्लस फंक्शन लिखना है. सो फॉर दैट हम रिटर्न टाइप लिखेंगे कॉम्प्लेक्स, क्योंकि यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट को ऐड करके थर्ड ऑब्जेक्ट में ऐड करना है और वो थर्ड ऑब्जेक्ट रिटर्न भी होना है. सो थर्ड ऑब्जेक्ट रिटर्न टाइप है कॉम्प्लेक्स. देन कीवर्ड ऑपरेटर, एंड कौन सा कीवर्ड, ओपी कोड क्या है, प्लस. एंड देन हमें कितने पैरामीटर पास करने हैं? एक्चुअली दो ऑपरेंड यूज़ करने हैं, बट मेंबर फंक्शन है तो सिर्फ सिंगल ऑपरेटर पास करना, सिर्फ सिंगल ऑपरेंड पास करना है, क्योंकि एक ऑपरेंड जो है वो ऑटोमेटिकली पास होगा. तो फॉर एग्जांपल मैंने पास किया है कॉम्प्लेक्स C2, क्योंकि C1 जो है वो मैन्युअली पास होगा. क्लियर? नाउ लेट मी राइट दिस ऑपरेटर फंक्शन आउट ऑफ द क्लास. So for that first of all return type complex, then operator function का scope like कौन से class से है तो complex, then scope resolution operator, then function name that is operator plus, and in that फिर से parameter जो हमने लिखा है complex C2. now definition में हम लिखेंगे फिर से एक another complex variable पास करेंगे C3. सो लेट अस राइट C3 डॉट रियल इक्वल टू, एक्चुअली हम क्या लिखेंगे C1 डॉट रियल, बट C1 की जो वैल्यू है वो तो ऑटोमेटिकली पास होगी, तो हम डायरेक्टली लिखेंगे रियल एंड देन प्लस C2 डॉट रियल. राइट, नाउ इमेजनरी वैल्यू को करना है तो C3 डॉट इमेज इक्वल टू इमेज
plus c2 dot image. Okay, now return c3. Okay, so this is the definition of operator plus function. Now let us write the structure of integer main. Now first you have to create object of complex class, complex c1. in that parameter हमें पास करना पड़ेगा फॉर एग्जांपल 4,7. तो 4 जो वैल्यू है वो r में जाएगी और 7 जो है वो i में जाएगा. सो 4 जो है वो रियल में जाएगा और इमेजनरी इक्वल टू 7. ठीक है, वैसे ही हम c2 ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं लाइक कॉम्प्लेक्स c2 इन दैट 2,3. ओके, सो रियल की वैल्यू है 2 और इमेज की वैल्यू है 3. नाउ लेट अस क्रिएट द थर्ड ऑब्जेक्ट दैट स्टोर द वैल्यू ऑफ c1 प्लस c2. सो कॉम्प्लेक्स c3. नाउ लेट अस डिस्प्ले c1 ऑब्जेक्ट की वैल्यू. सो c1 डॉट डिस्प्ले देन c2 डॉट डिस्प्ले. नाउ हमें ऐड करना है तो हम ऐसा लिखते हैं सी आउट /n लाइक दिस. तो एडिशन होके डिस्प्ले होगा, इसलिए आई राइट c3 इक्वल टू c1 प्लस c2. तो ये क्या करेगा, c1 प्लस c2 ऑपरेटर फंक्शन प्लस को कॉल करेगा. c1 जो है वो ऑपरेटर फंक्शन को कॉल कर रहा है, इसलिए c1 जो है वो ऑटोमेटिकली पास होगा एंड c2 जो है वो मैन्युअली पास होगा, जो यहाँ पे c2 ऑब्जेक्ट में जाएगा. ठीक है, नाउ लेट अस डिस्प्ले वैल्यू ऑफ c3. सो c3 डॉट डिस्प्ले. ठीक है, नाउ लेट अस कंपाइल इट, नो एरर, लेट अस रन इट. okay, 4 plus j7 and 2 plus j3 that is c1 and c2 and addition क्या होगा 4 plus 2 6 and 7 plus 3 10. ठीक है, clear. So here I explain binary operator overloading through member function. Now for example हमें friend function ने यहाँ पे operator function को जो friend function बना दिया है, then यहाँ पे हमें स्कोप निकाल देना है, directly return type and ऑपरेटर फंक्शन सेम. बट यहाँ पे डिफरेंस क्या है, जैसे ही फ्रेंड फंक्शन बनाया हमें दोनों ऑब्जेक्ट जो है वो मैन्युअली पास करने पड़ेंगे, क्योंकि ऑटोमेटिकली कोई फंक्शन कोई ऑब्जेक्ट पास नहीं होगा. सो कॉम्प्लेक्स c1 कॉम्प्लेक्स c2. तो यहाँ पे हम लिखेंगे c1 डॉट रियल, c2 डॉट रियल, c1 डॉट इमेज, c2 डॉट इमेज. ओके, एंड यहाँ पे एज इट इज होगा, यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा. नाउ लेट अस कंपाइल इट, नाउ लेट अस रन इट. ओके, सेम आंसर आता है. सो आई ऑल्सो एक्सप्लेन दिस बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग using member function and friend function. Clear? So today hope you understand how to overload operator. Today you learn unary operator overloading using member function and friend function, and you also learn today how to overload binary operator using member function and friend function, right? So if you have any query regarding this topic, then you can message me. Thank you.